Today we will learn about a very important non-parametric statistical test called Goodman and Kruskal Gamma test. Basically, it is a non-parametric test for correlation, and it measures correlation between two ordinal variables. Ordinal variables, which mean variables that can be ranked but not measured exactly. Okay, let's moving forward. What is Goodman and Kruskal Gamma test? A non-parametric measure of ordinal association between two variables. It was developed by Leo Goodman and William Kruskal in 1954. It indicates the degree of association and direction of association, and its value range from -1 to +1. As we all know that +1 means perfect association, perfect positive association, and -1 means perfect negative association, and 0 means no association. Okay, let's moving forward. What is the difference between gamma and other correlation tests? As there are many correlation tests, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो जो हमारा गामा होता है, गामा इग्नोर्स टाई while rank correlation like Spearman and coefficient and Kendall's tau includes tie in calculation. Now difference between gamma versus Somers'd. Gamma is symmetric and does not differentiate between dependent and independent variables, where Somers'd is asymmetric and requiring a distinction between dependent and independent variable, and also it accounts for tie in the dependent variable. When to use it? जब हमारे दोनों वेरिएबल ऑर्डिनल हो तब हम इसको यूज़ करेंगे, एंड व्हेन अ डाटा इज़ इन अ फॉर्म ऑफ कंटीजेंसी टेबल, जैसे 2/2 और 3/3 में हो. नाउ it is appropriate when interested in rank order relationship, and gamma is symmetric. Relationship is same regardless of which variable is dependent. इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है. ओके, अब इसके कुछ एजप्शंस है वो देख लेते हैं. बोथ वेरिएबल शुड बी ऑर्डिनल, रैंक्ड कैटेगरी, द ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, there should be no ties on both variables, that is, all pairs should have different ranks for both variables. Gamma can still be used if there are ties, but it might give a biased result. Okay. Now formula to calculate gamma: C minus D divided by C plus D. Here C is the number of concordant pairs and D इज़ द नंबर ऑफ़ डिस्कॉर्डेंट पेयर्स. तो अब हम सी ओ डी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके पहले हम समझते हैं कि सी ओ डी होता क्या बेसिकली. तो जो सी होता है हमारा कॉन्कॉर्डेंट पेयर्स मीन्स जब दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहे हो या डिक्रीज़ हो रहे हो, ठीक है, तो वो आ जाते हैं हमारे कॉन्कॉर्डेंट पेयर्स के अंदर. और डिस्कॉर्डेंट पेयर वो होते हैं जब एक इंक्रीज़ और दूसरा जो है डिक्रीज़ होता है. मतलब ए पेयर इज़ discordant if one variable increases and simultaneously other variable decreases, and C means both variables increases or decreases together. ओके, तो अब हम समझते हैं कि COD को कैलकुलेट कैसे करा जाता है. तो ये जैसे कि हमारे पास में कंटिंजेंसी टेबल है, ठीक है, 3/3 की. इधर एक साइड में प्री कॉम्पिटिशन कॉन्फिडेंस है और एक साइड में हमारा कॉम्पिटिटिव एंजाइटी लेवल है. और इसके 3 हमारे आंसर्स हैं: लो, मॉडरेट एंड हाई, लो, मॉडरेट एंड हाई. तो सी के लिए सबसे पहले फॉर एवरी सेल काउंट हाउ मैनी सेल्स बिलो एंड टू द राइट. तो फॉर ए इंटू ई प्लस एफ प्लस एच प्लस आई प्लस बी हियर, और बी के लिए जो भी इसके राइट में होंगे और उसके नीचे होंगे, ठीक है, ये बी है तो बी के लिए जो भी राइट में और नीचे होंगे वो हम ऐड करेंगे. तो बी इंटू
f प्लस आई, एंड फॉर डी इसके राइट और लेफ्ट नीचे हम देखेंगे तो वो एच और आई है, तो डी इंटू एच प्लस आई, एंड फॉर ई इट इज़ ओनली आई हियर। ओके, तो हम इनको पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा सी की वैल्यू आ जाएगी। एंड सेम फॉर डी, फॉर एवरी सेल काउंट हाउ मैनी सेल्स आर बिलो एंड टू द लेफ़्ट। ठीक है, तो फॉर सी के इधर के लेफ़्ट में कौन कौन से हैं हमारे, तो ये तो बहुत सारे ए बी डी ई जी एच, पर यहाँ पर क्या हमको बिलो वाले देखने हैं, तो सी के बिलो जो है डी ई जी एन एच है, तो सी मल्टीप्लाई बाई डी ई जी एच। सेम फॉर बी लेफ़्ट एंड बिलो, तो बी मल्टीप्लाई बाई डी एंड जी, एंड सेम फॉर एफ एंड ई। तो इससे हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी, एंड सिंपली इस सी और डी की वैल्यू को हम पुट करेंगे हमारे गामा के फॉर्मूला में, एंड हमारे पास में जी की वैल्यू आ जाएगी। उससे हम निकाल लेंगे कि जो एसोसिएशन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर नो एसोसिएशन है। ओके, अब इसके जो स्टेप्स होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटेड क्रॉस डेप 2x2 और 3x3, जैसा कि हमने देखा था कंटिंजेंसी टेबल। ओके, नाउ आइडेंटिफाई एंड काउंट ऑल कॉन्कॉर्डेंट पेयर्स, and then identify and count all discordant pairs. Now fourth, plug into the formula gamma equals to c minus d divided by c plus d, and then interpret the result whether it is positive association or negative association or weak association or no association. Okay, now we will understand how do gamma in Excel. Now we will learn how to calculate gamma in Excel. So here we have two variables, pre-competitive confidence and competitive anxiety level. Both the variables is categorical variable with three categories: low, moderate and high, arranged in a contingency table of 3 by 3. As we all know the formula of gamma, G equals to C minus D divided by C plus D. Here we have to identify all the C pair and D pair. As the formula of C, as we all know, we have to count all the cells below and in the right of that particular cell for C. And for D, we have to identify all the cell which are in left and below of that particular cell. Okay, let's calculate. For 2 multiply by the sum of all the pairs which are in right and below. Now for second pair, now for third, multiply by sum of all the pairs below and to the right. So this one. Okay, and now second, this multiply by the sum of all the pairs below and in the right. Here only one pair. Okay, now D, we have to calculate D. Now second pair, multiply by sum of all the left and below pairs. Now for next, bracket close,
and the last one. Okay, bracket close. Okay, so these are the value of all the C pair. Here we have to sum all the C and all the discordant pair. Now put the value of C and D in the formula of gamma. As we all know the formula, gamma equals to C minus D bracket close divided by C plus D. Now bracket close, and this is the value of gamma. Thank you.